मैं तो इंग्लिश में बताओ अरे इंग्लिश का पेपर आएंगे इंग्लिश का आएंगे ना नोट्स आएंगे मैं दो दिन से देखने के लिए चेक करती वैसे ही देखते हैं हाँ मम्मी पापा बाहर हैं मैं सीरियल दोबारा का और इंग्लिश में देख सकते आज से मैं अब देख मैं भी करती थी पर फिर मैं भी देख रही थी एंड फिर आपको नोटिस बताओ so anyway there's also any elections which are also that's why I think so much probably extra just execution in this game branch. It is but because most of the hours are not one participate in the flag of China like that पकड़ने का कोई ऐसे भी नहीं सकते सीधा कुछ तो पढ़ना वाला आदत है लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन जब आता है जब स्टैंड पर क्लास लगाया जाता है अच्छा उधर में दो बार उसने कम किया रास्ता तुमने क्या कर सकते हैं मैंने गलती कर दी है मैंने लिटरली घंटे तक किया तो अक्टूबर को क्या खाओगे मेरा इंग्लिश पढ़ने लेवल को देने वाले तो मेरे क्या मस्त है पहले पढ़ने क्या करता है हाँ मैंने कर लो पहले ये भी लाता है फिर 100 लाता है फिर 100 70 फिर डांस में 46 पहले उसके बाद
But speak out of the fine. We are start the Monday have management. Same or travel. Quadratic equation में top class. मैंने call numbers, quadratic equation और क्या अभी triangles, probability का test किया तो उसमें लॉक मारा था उसके बाद मैं कौन से और दो तीन टेस्ट किए आज नाम का एक क्लास है सर दोनों सर बोला ई कौन है ओए अरे कैमरा के पास आओ ना। हाँ क्या हुआ कैमरा के पास आओ ना। आगे यस गुड। कोई तेरा और ये तेरा और मूवमेंट आया थोड़ी भाई ईयरफोन्स लगा रहे थे Good evening. I was expecting you were having a mobile. Oh, yeah. Oh, faster. Hey, we had completed that transport, lifelines, yes sir maps, and you need some theory part. Your school teachers have told that is only for the map 3 marks, not even 3, it's 2 marks only. Divya, come here. Where is she? Come here. I said, come here. Like a old lady, she is sleeping. Get up from there. And hiding behind Abilipsa's back. What is it? No, you have to come here. What is this? I'm giving her first bench and she's running in the last bench. Manufacturing industries, where did we? we didn't start We didn't even start. Oh my god, a lot of things are there. Chalo, hey, you switch on the radio, boy. It says. Viraj यस नहीं हम समझे। क्या हो गया तू आया क्यों नहीं? चलो इलेक्ट्रिसिटी की नोटबुक में बीच में इधर आ जा इधर no I know that is why I'm telling you. Write down introduction part quickly. I don't doubt you. He's the most regular student and studious student I've seen. At least in this. sir yes I am the studious student Very good. Write down. thank you sir Industries. sir wait मुंह का बड़बड़ी हो. yes sir मैं पूछना. Industries are. sir wait sir Now you say. yes sir Industries are economic units or firms. industries are Economic units or firms. wait तुम्हारे जैसे. oh So बाहर से बाहर. Are economic units or firms economics or firms which converts. Attendance sheet दे देना अंकल को. किधर है? ऑनलाइन में एक बच्चा है. समर्थ है ना? समृद्ध है. which converts Raw materials into. Which converts raw materials into readily usable finished products. readily Usable finished products.
Definition of industry. Importance. I'll be giving short and bullet points only. Huh? Point number 1. Ensures. Importance of industries. Ensures. Point number 1 right now. सर मैं लिख रहा हूँ मैं इसको दिखवा दूंगा नहीं दिखा वो उसको हेल्प करेगा तो वही उसको हेल्प करेगा तू मत दिखा पॉइंट नंबर 1 ensures higher economic growth and development ensures higher economic growth and development ensures higher economic growth and development second point encourages steady employment steady throughout the year steady employment throughout the year next helps in poverty reduction helps in poverty reduction and unemployment next reduces over dependence on agriculture over dependence on agriculture next modernization of agriculture only through modernization of Indian agriculture only through modernization of agriculture only through industrial equipments like tractors harvesters chemical fertilizers and pesticides Now read all this and tell me, is it the industry is doing? Okay, everybody knows industry आने के वजह से आज इंडिया कौन सा position में है, right? We are just closing to the 5th largest economy. Maybe very soon we might be the 3rd largest economy. Agriculture alone cannot do. Industries has to play big. So what are industries which converts raw materials into finished products? Why raw materials need to be converted? Can you and me use the raw materials directly? No. Can we like सही तो बोला raw material, fruits are raw material. No. You keep quiet. Why do you say this? We do. Is raw fruits are raw materials? Then name the industry. If fruits are raw materials, वो कौन finished product में क्या convert हो? तो बोलो. जैम. तो फिर क्या बोलता है कुछ चीजों में वो तो convert हो रहा है ना? और जैम में convert होने के लिए क्या चाहिए?
हाँ इंडस्ट्री तो फिर खुद भी बोलती है जैम फिर बोलते कुछ चीजों में नहीं. So we always believe for a country like India, industries are quite important. GDP, correct? Increase in national income, unemployment reduce होगा, poverty कम होगा. देखो industries alone नहीं. There are so many industries in India which are called as agro-based and some are called mineral-based. What are agro-based? Raw material comes from agriculture, like cotton textile, raw cotton. She said fruit processing. So then it becomes raw material. Jellies, jams, squashes, okay. मालूम है squashes क्या होता है? Then we have this sugar mills. And what else we have? Jute textiles, है ना? And then mineral based में आएगा iron and steel, automobile industry, correct? IT, software, ये सब mineral based है, जिसमें agriculture का कोई संबंध नहीं. So ये हमारा पूरा chapter में यही है. We'll be going into the classification. Then we'll be studying agro-based industries separate and mineral-based. अबे directly डाल दो classification of industries. Open to page number 151. Classification of industries. Directly put the heading. And जैसा volume में दिया है वैसे ही लिखो. But try to mention the example. अबे first one, it is on the basis of raw materials. The basis of raw materials. So we have one agro-based, उसका example लिखना है, ठीक है? No need to write what is agro-based, it is big. Then two mineral-based, उसका example लिखना है. Three main role and consumer industries. Main role industries. सर चारों के 4 पॉइंट्स लिखे मतलब हेडिंग है पॉइंट्स नहीं है. हेडिंग लिखना है ना. हाँ तो उधर एग्जांपल भी उधर दिया है. Example of the industries. Then B on the basis of ownership. Copy directly from the owner on the basis of ownership. So do we have to write just the heading? This. The example industries. Okay. सर मतलब एग्जांपल ऐसे वो शुगर वगैरह ये लिखा है. हाँ तो उसका एग्जांपल क्या है वो लिख दिया. यार तुम लोग दोनों से क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं. सर एल्युमिनियम इंडस्ट्री. You carry on. Both has to be separated now. Today you utter any nuisance, both will be nook and corner of the country. Carry on writing. Samrat, are you writing, boy? It is in page number 151. Huh? Yes, sir, I'm writing. Page number 152. Today we got 2 lectures. Yes sir. We'll try to finish at least 3/4 of this chapter, or I can complete the whole chapter also. Suffering from extreme viral fever and other things. That is it. सर तो आपने छुट्टी क्यों नहीं ली? बस यही सोचते हैं. सर हेल्थ इज हाँ, I know that. प्रायोरिटी. Thank you. This much amount of variation speak, somebody will become after that. Yes. Carry on. All सर मेन रोल on the basis of ownership. सर मेन रोल मतलब Up till page number, you write the heading.
It is all page number 157 तक है. She has written only one and हो गया. तरीका करिए. Wow. Till the last one, next page. Till the next page you have to do. Done? Very good. Now up till agro-based and mineral-based it is okay. Sir, example भी लिखना है ना? There is an industry which is called as main role industry, correct? Yes, sir. I believe sir, tell the heading, example of main role industry. Example you have written, na? Why it is called as main role, anybody? Sir, Because in its absence, the other industries are simply incomplete. Now, can I say for you guys, which is the main role industry? Education. School, that's an industry. But education is one big industry. Because nowadays you can see many big politicians, either they start the school, which has become a common offense, sorry, not an offense, offer, or even start a big hospital. Why is it so? Why is it so? Because either the school or this hospital industry is going to sleep. It is going to, as long as patients are there, as long as diseases are there, hospitals are going to run. How about in the school education industry? As long as parents are, मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ने का, मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ने का, या हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा है कि गलती से इंग्लिश मीडियम में, इसको तो मैं बोलता हूँ मुझे उस स्कूल में डाल देने का, मराठी मीडियम में. तो फिर, no, so then go to your northern side. So from north only, na? Where? And where it is. But Gujarati, you speak Gujarati, na? So learn Gujarati maybe. So what will happen? This vernacular schools will not allow this big private schools to charge anyone. पहले ही मम्मा या पापा बोलते नहीं मेरा बेटा या मेरा बेटी पढ़ने का so called international school में तो बड़ा फीस. So whatever industries we are going to study, it is going to be classified in either of these industries only. Are you understanding? yes. So let us write the next heading. Please write the next heading there only. The heading is agro-based industries. अब लिखना कम रहेगा. It is only the volume. Every bench is having volume. Well, I'm asking every bench is having a volume. Sir, based on work and weight लिखना है क्यों नहीं लिखना है? Now let us go into agro-based. देखो उधर first दिया है textile है ना? So why textile industry is an agro-based? Anybody? Because the raw material called cotton comes from agriculture. Is cotton from agriculture? I don't know. Wait. How? Huh? What grows? Where? Which plant? Wait now. Which plant?
I haven't seen any cotton plant growing on cotton. Where? If you've seen, tell me, na, where it is. Where in which? सौराष्ट्र में कॉटन ग्रोथ है। मैंने देखा है। तुम्हारे कोई प्लांट लगा के दिखा है तो वो भी बहुत होगा। सौराष्ट्र में कच्छ एरिया में। हाँ। सौराष्ट्र कच्छ एक ही है ना? नहीं, कच्छ थोड़ा आगे। हाँ। 150 किलोमीटर। क्या? गाँव इसका और एड्रेस में बता। चलो। Everyone pick up to page number 152. I am only reading, I am only marking, and you are getting understanding. Underline that word. Textile industry occupies, only underline, unique position. Out of the two, who do not have a volume? Me. क्या मैंने volume में कर दिया? एक वॉल्यूम का दूंगा पूरा साल भर बिना वॉल्यूम का निकाला है तो कभी 150 रुपीस खर्चा नहीं करता है 150 का एक नहीं मिल रहा तो हटे तू इधर आजा लेकिन सीधे go and get your volume जा बुक भी लेकर आजा तू इधर बैठ because I can't tolerate these kind of things आ जाओ नहीं तू बैठ जा वो आ जाएगा तू बैठना next it contributes significantly underline industrial production 13%. Employment generation underline 4.cr persons directly. So what is this direct employment and indirect employment? Sir, जिसमें डायरेक्टली पैसा लेते हैं और इनडायरेक्टली में process I believe sir. Directly पैसा देते हैं indirectly पैसा देते हैं. Is it so? Those who are working in cotton field, those who are working in cotton textile, they are directly employed. And indirectly indirect employment क्या होता है? You bring the volume and come in. Indirect employment who are involved in transport, who are involved in packaging. वो cotton तो बनाता नहीं है इधर ही. But every time you should have a volume. If not, I will not allow you. By next lecture get the volume. So indirect very simple है. अभी मैं cotton textile field का नहीं, but I am involved in marketing. एक example. Am I getting money from cotton? I am getting money from marketing. Marketing what? Cotton textile. समझ में आ रहा है? So they are indirect. Second, third point. Employment generation हो गया. Foreign exchange earnings. Underline that word. Foreign exchange earnings. 12%. जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जो कमाई आता है उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट मालूम है क्या होता है एक्सपोर्ट वो तो मैं भी हर साल जाता हूँ तो मतलब एक्सपोर्ट व्हाट इज इट व्हाट इज एन एक्सपोर्ट when India is selling its commodity to foreign country at a fixed price at an international rate इंडिया से बाहर जाता तो एक्सपोर्ट उनको करते हैं एक्सपोर्ट अफ्रीकन उधर भी नहीं फिट बैठेगा नेक्स्ट इट कंट्रीब्यूट्स अंडरलाइन 5% टुवर्ड्स जीडीपी इसका भी मुझे आंसर देना पड़ेगा इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री अंडरलाइन सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट अभी क्वेश्चन डालो नोटबुक में व्हाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री is self-reliant and complete. Why? Textile industry is self-reliant and complete. Answer. It plays a unique role. So we are giving the answer. Yes. It मतलब कौन सा है टेक्सटाइल हाँ वेरी गुड इट प्लेज अ यूनिक रोल इन इंडियन इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडियन इकोनॉमी पुट अ हाइफन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन comma
Forex earning, forex का मतलब foreign exchange. Next. Forex earnings लिखा, employment generation, forex earning, GDP contribution, and So the GDP contribution is the next point, right? no, it's all in one line. कॉमा डालते हैं ना, GDP contribution and economic strength of the nation. Economic strength of the nation. Now look at, when I explain this thing in a very simple way, you say without textile industry can India grow? Cannot. No, because most of the our country is mostly based on. Correct, agro-based. Or India is the only country where we manufacture maximum cotton. We not only manufacture, we make use of it also. क्योंकि इंडिया का ऐसा कौन सा कोने में नहीं है जिसको कॉटन क्लॉथ पसंद नहीं है, सबको पसंद. Why? Because of the climate. क्या बोला? It's okay, tell me. Comfortable, हाँ. हाँ, ये दे दो, कॉटन का है ये. ये कॉटन का नहीं है, फिर किसका है? सर्दी लगती है वो। वही तो Tell them, I do not do, because I am not in. ब्यूटी को पसंद है। Sincere करती है, इमेज दे दो। और अगर एक्स्ट्रा लेना है तो फाइव first t-shirt is free. दो भी और दो फ्री है और थर्ड क्योंकि हम लोग हर जगह हर दिन रहते हैं कुछ फ्री में दिया तो चुपचाप पहन ली. मैं ये खत्म होने के बाद कंसीडर करता हूँ मैं किसी और को दे दूँ नेक्स्ट पहला उसके मुंह से क्या निकला? अपने आप को कभी डालो, शायद दबा तो भी शर्म आएगा. So when we talk about textile, India has been an age-old producer of cotton, jute, silk. अभी देखो silk right from North India to Southern India, right from Gujarati to a Bengali. Everyone wears silk. The quality of the silk, the type of the design, everything is different. What does it mean? Every Indian woman likes to wear a silk saree. Simple. Forget about women. Even we as a man also wear silk shirts. Pretty costly, but शादियों में या कुछ important function में हम लोग भी पहनते हैं. But silk cannot be worn throughout the year. Why? Weather, climate, गर्मी है बहुत, है ना? There is a cloth called linen. Linen सुना है? Nylon सुना है? हाँ. ये सब भी है, but सबसे best हमारे body के लिए जो suit करेगा वो cotton. So cotton is 100% self-reliant and complete. Complete का मतलब क्या है? जितना इधर बनता है उतना उसका यूज भी है. कोई समझ में आया? चलो, let us proceed. Now go to volume cotton textile. In ancient India, cotton textiles were produced underline hand spinning, handloom weaving technique. अभी handloom की जगह पर क्या है? Am I sitting in the chair by like you guys? ये तो इसका तो मैंने लेटर डाल दो. Comfort to then put two legs on the in front of the teacher. This is the way you sit. Your parents didn't taught you some manners, basic manners. What do you want? Let me see how long you follow. First of all, a girl or a boy sitting like this, shaking the leg in a very majestic way, that itself is a wrong habit. Anytime your parents didn't tell you. History, as our power looms came into existence, our traditional industry suffered under a setback during colonial period. What is the colonial period they are referring here? British. What is the period? Tell me. 1857 to 1947. लिखो. नहीं. वो लोग इंडिया में कब कैप्चर किए? 17. बैटल ऑफ प्लासी तभी था ना 1757.
1757 to 1947. लिखो उधर तो तेरे वाले में because they could not compete with underline mill made cloth from India. A big simple story. The story goes like this: that I come to your house thinking that whatever I bring will be very demanded by you. You do not have anything in your house. But when I come to your house, I came to know, oh my God, your production technique is much superior than me. Your cotton is far better than me. Your cloth is demanded in London. फिर मैं लंदन से इंडिया में क्या कर? Then they were shocked. They said, let us make Indians dependent on the British. How could they make it? First of all, they purchased all the raw cotton and took it to London. अब बनाओ तुम अपना cloth. है ना? And second, they said that we are warning so and so people. Like example, let us say Divya. She is a very good manufacturer of cotton cloth. So I give her warning. She doesn't listen. Third warning, fourth warning, doesn't listen. One day I call her, cut both of her hands. ये भी किया British ने. हाथ रहेगा तो machine. करेंगे कैसे? So these were the things done by the Britishers so that the Indians do not compete with the foreign. But still then, London people, they loved the cotton clothes manufactured by Indians, not by the British. Because it was 90% a machine made cloth, Indians were handmade. देखो अभी भी शायद लड़कियों को मालूम रहेगा, तुमको मालूम नहीं. Sarees जो है ना, handmade साड़ी ज़्यादा costly रहती है. मालूम है? Machine made साड़ी उतना costly नहीं रहती क्योंकि डिजाइन और प्रिंट एक ही जैसा मार्क. वो एक साड़ी बने 100 साड़ी का एक जैसा मार्क. जबकि हैंडमेड साड़ी एक बनाने के लिए कम से कम उसको 1.5 महीना लग जाएगा. वही अगर मशीन मेड साड़ी 1.5 महीने में बनेगा तो 100 क्या 100 200 1000 साड़ी बना देगा. तो देखो हमेशा वो जो साड़ी सेलर है बोलता नहीं साहब ये तो हाथ से बुना हुआ साड़ी है. करेक्ट. तो हैंडमेड हमेशा महंगा है. क्यों? Because of the labor work which is put in. Got it? चलो let's move ahead. The first successful mill, underline that, in Mumbai 1854. ये आपको मालूम है कहाँ हुआ? 1854 में मुंबई में परेल एरिया गया है. परेल लोअर परेल में पहला मिल स्टार्ट हुआ. ओके, कॉटन टेक्सटाइल. वो छोड़ दो, फीचर्स में आ जाओ. There were 1946 cotton and human made mills. About underline 80% of this bracket में डालो private sector. Now there will be a question, why 80% of the mills, cotton mills are in private sector? Why only 20% in public sector? Public sector मालूम है ना? Government क्या? Why 80% private में है? बोलो. They can put any price in. गवर्नमेंट के वो लॉस रहते कि इतने दाम. These are small units and scattered units. And गवर्नमेंट का पैसे जरूरत नहीं कॉटन टेक्सटाइल लगाने के लिए, खुद के पैसे से स्टार्ट करते हैं. अबे उस टाइम पर कॉटन टेक्सटाइल कैसा रहता था? घर में 5 मेंबर है या 6 मेंबर है, 4 मेंबर तो कॉटन टेक्सटाइल ही बना घर के अंदर है. अंडरस्टूड? हम लोग की तरह फ्लैट सिस्टम में थोड़ी रहते थे. अरे गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. गांव में रहते थे एंड एक सरकार जो है घर के कोने में डाल दिया. सुबह से शाम तक जेंट्स ने कर लिया या शाम से सुबह तक लेडीज ने कर लिया. फैमिली मेंबर्स ओनली डूइंग. एग्रीकल्चर करते थे और घर पे आके कॉटन टेक्सटाइल. सो ड्यू टू ऑल दिस हमारा इंडिया में एक ट्रेडिशन रह गया कि कॉटन टेक्सटाइल मिल सके. नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है. आप अभी भी जाएगा ना वो शिवाजी पार्क एरिया में, कोहिनूर मिल्स प्राइवेट सेक्टर, मथुरदास मिल प्राइवेट सेक्टर, आनंद मिल प्राइवेट सेक्टर, और ये एक इसका है आनंद महिंद्रा का एक कंपनी, वो भी प्राइवेट सेक्टर. तो अभी भी बड़ा बड़ा कंपनीज जो है कॉटन टेक्सटाइल पूरा प्राइवेट सेक्टर में ही है. ऐसा गवर्नमेंट को कभी लगा नहीं कि मुझे पैसा लगाना पड़ेगा. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है. इन्वेस्टमेंट है ह्यूज. अभी 50 लाख रुपए अगर आपको मैं इंडस्ट्री के लिए बोलेगा, आप बोलेगा सर कुछ भी नहीं. आप 10 लाख में कॉटन टेक्सटाइल स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें सबसे ज्यादा पैसा है. क्यों? ये मिल्स कभी बंद नहीं होने वाला है. क्यों? कॉटन क्लोथ्स का डिमांड थ्रू आउट द ईयर चलता है. whether it is rain, whether it is winter, we love to wear cotton shirts, है ना? अभी कॉटन का तो बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड भी हो गया. वो कौन सा है? कॉटन काउंटीज.
a cotton king. अभी कोपर के नाम में ऐसा ना देखा. Cotton cottage. Cotton cottage, okay. Cotton जो भी है, मतलब कॉटन का नाम से उन लोगों ने अपना ब्रांड बनाया. तो अभी भी ये प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा चल रहा है, पब्लिक सेक्टर में नहीं. ठीक है. Location underline concentrated in cotton growing belt. Bracket में डाल दो महाराष्ट्र एंड गुजरात. Localized underline the word localized. मतलब जिस एरिया में कॉटन ग्रो होता है मिल्स भी उधर ही रहता है. ओपन ब्रैकेट because of raw cotton availability, market, transport, accessible port. Now, why they are asking the word accessible port is very important. For cotton के लिए port है. जहाँ से produce Export. Yeah, port से produce होता है. Sir, export. Very good. Country में Everyone write export because India exports a lot of cotton. Port का मतलब ही export है. Ship. Labor and moist climate. अब ये क्वेश्चन के रूप में डालो and you are only going to write the answer. Why? Cotton textile mills are highly localized. Localized का मतलब जहां ग्रो होता है उधर ही इंडस्ट्री भी है. अब इसको पॉइंट बना लिखा, अच्छे से सुनो. पहला पॉइंट है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन है. वेट cotton textile mills are localized because point number 1 easy availability of raw cotton. Suno better marketing facilities, good transport and accessible port facilities, easy availability of labor and suitable climate. चलो points बनो. words उधर का है, points खुद का है. पहला पॉइंट तूने क्या बनाया? सर पहले पॉइंट था कि it is easily accessible. पहला पॉइंट उधर वॉल्यूम में क्या दिया है? Importance है ना. To cotton textiles industry has closed into Rajput. वो नहीं. Location लोकलाइज के आगे क्या दिया तू यहाँ पे? अरे local. Wait, he is asking. You carry on. Yes, sir. लोकलाइज के आगे क्या पॉइंट दिया है? Localize. ये वो इतने सारे वो कट स्टेट्स का. He will find his way. You don't keep on poking. Localized के आगे क्या वर्ड दिया है वो पहला देख. Sir, cheap cables. Availability of plenty and cheap labor. Because of availability. हाँ तो वो पॉइंट कैसा लिखेगा? तो because raw cotton. पहला पॉइंट बिकॉज में स्टार्ट होगा. नहीं. फिर बना इंग्लिश बना. Easy availability of raw materials. Wait, your friend will write only one word itself first. I'm searching for. अभी let's read all your points. सुन लो दोनों, बाकी दोनों. Cotton textile mills are highly localized because first easy availability of raw cotton, best marketing facilities, good transport, easily available of labor. Easily available of labor कैसे है? Availability of labor. Easy availability of labor रहेगा. Easy available. हाँ ठीक है. She can also make mistakes. Suitable, हाँ suitable. ठीक है. You read. Easy availability of raw cotton, nearness to the market, cheap transport, accessible port facilities for exporting cotton and finished products, plenty and cheap labors,
Moist and favorable climate for growth of the. Very good. This is what I expect. Abilips also missed 1 or 2 words. You Divya, read. Easy availability of raw Come again with that word. Easy availability of raw cotton. Next. Access to market, good transport and accessible code, cheap labor, limited. Cheap labor. Cheap labor का उधर क्या है? Availability of cheap labor. वो लिखना है. Next. Wait, let ask him to read. Completed. सर कितने वर्ड लिखे मैंने? वो जितना भी है वो उतना पढ़. तूने जितना लिखा है. अच्छा, raw materials are easily available. It has the best marketing facilities, easy availability of labor. It has cheaper transport. It has cheaper transport. What is that? It has cheaper transport. What's up? It has cheaper transport. Now, what is that it here? Sir, the cotton. How the mill will have cheaper transport of its own? What's up? How the mill will have a transport of its own? So like by procurement. Yeah, मैंने simple सा question पूछा. How the company will have transport of its own? तो क्या लिखना होगा? ऐसे वो ports वगैरह की वजह से. नहीं, तूने क्या लिखा है? It will have a cheaper transport of its own. कंपनी थोड़ी ट्रांसपोर्ट अरेंज करती है, उसके लिए अलग बंदे लोग रहते हैं ना. हाँ, तो फिर वो पॉइंट उधर चेंज करना पड़ेगा तुझे. ट्रांसपोर्टिंग लेबर. यार अभी ट्रांसपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं, फिर तू चुप बैठ. तो पहले तो पैर अंदर रख दो. बेंच छोटा है पक्का. You're not so tall enough. Listen, you're not so tall enough. Turn this side ना. एक मिनट ना. तू इधर आ. तेरा शू इधर लेकर आ. और लेकर आ. और लेकर आ. हाँ, अभी उधर स्ट्रेच कर तेरा पैर. हाँ, बस. Such नहीं कुछ नहीं. ठीक. तू और वो तेरे पीछे बैठी है ना. both are similar character. Only the boy and the girl is a difference. अरे सर वो पैर में दर्द Very okay. यार पैर. स्कूल में लगा था मेरे हाथ पे. हाँ. Let us go to the next. Importance of cotton textile. अभी मैं directly question दूँ. You'll write on your own. Briefly explain. इसको तो सेंटेंस बनानी नहीं आता तू. अरे सर मेरे को आइडिया ही नहीं. हाँ, तुझे तो बहुत आइडिया रहता है. चुपचाप लिख. Briefly explain the importance of cotton textile industry for India. Briefly explain importance of cotton textile industry for India. ये पहले points पढ़ लो. Is it possible for you guys to write? Say yes. If not, I can give it a more time. I think coughing is gone. I don't know. और उसकी मम्मी मुझे इसको पकड़ के बात कर रही थी ना. वो वैष्णो इसको हम दोनों कुछ भी है. मैंने बोला नहीं, मैं आप लोग नहीं बात करेंगे. आप लोग जो एक नाम बोले बहुत जरूरी. क्या नहीं आंसर लिखे क्या आप बताओ. नहीं. You see your benefits. We should write right. Best. If you want me to give, I'm ready. Then you can do it. Right now. It's okay. Right now. They should not feel my sir. Answer what we accepted. India, with its historical connection to cotton textile. Historical connection to cotton textile generates a high level
importance, Of importance or high level importance of the functioning of cotton textiles. Its importance is summarized as follows. Its importance is summarized as follows. तो लिखना point number 1. It establishes, अभी ईट के जगह पर cotton textile यहाँ से, ठीक है? It establishes close links with links with agriculture. Next. Increase in overall employment. Especially majority of the work is done by human labor. Since majority of work is done by human labor, machines come in. Yes. High demand by supporting many other industries. High demand by supporting many other industries. Like कौन सा इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है? chemical, Dyeing, DYEING, dyeing. Come on, mill stores, packaging, dyeing, mill store. वो the volume में जो है पूरा लिख. Dyeing, packaging, and tailoring and sewing. You know what is tailoring and sewing, ना? yes. अभी तो हम लोग टेलर को देखता भी नहीं है. एक टाइम था कि टेलरिंग इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, है ना? कपड़ा लेने का जाके टेलर ही सिला था. अभी तो कॉटन टेक्सटाइल इतना बढ़ गया है. नेक्स्ट, cotton yarns. Are also exported to Japan and cotton goods too. Exports to Japan and cotton goods to US, UK, Russia, France, etc. So Japan के foreign Because Japan is also hot and humid country only, ना? तो वो डायरेक्ट गुड्स क्यों नहीं लेता उसको? जापान में लैंड ही किधर है कॉटन ग्रो करने के लिए? हाँ, जैसे यार्न लेके उन लोग खुद ही क्लॉथ बनाते हैं. डायरेक्ट गुड्स क्यों नहीं लेते? नहीं लेने का, उनका जापानीज स्टाइल में शायद हम नहीं डेवलप करेंगे. और यार्न फैब्रिक, यार्न चीपर रहेगा या क्लॉथ चीपर रहेगा? सर लेकिन यूके रशिया में तो गर्मी नहीं होती. कौन बोला?
देखो, it is not the climate every time, but there are people who prefer, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो कॉटन का कपड़ा पहन के थोड़ी हो जाता है. He wears 6 layers of dresses. I personally used to wear 6 layer when I was working in US, -9 पे. तो 6 layer में हमेशा थोड़ी पहना था. ऑफिस जाते मेरा 2 layer जो है अंदर का वो निकल के कॉटन शर्ट से मैं काम करता था, क्योंकि हीटर इतना पावरफुल रहता था. अंदर जाने तक ऐसा लगेगा कि आई एम डन. जैसे अंदर गया आई हैव टू रिमूव ऑल. Heater is very strong. Forget about my university or office where I used to work. Even you get into a mall, the heater is very strong. Even you get into a bus, the heater is very strong. Heater and cooler दोनों simultaneous काम करता है. Summer time में तो cooler रहता है हर जगह. And Canada and US, some part is the only country where there is no electric fans are made, nor sold. Electric fan का जरूरत ही नहीं है. Highest temperature हम लोग 20 degree में रहता है. So for you and me 20 degrees what? Severely cold. We will be shivering. For them it is very hot. They wear minimum clothes and start running here and there. मैं बोला ये क्या है? बोला it is very hot. बोला very hot आपके लिए देखा, हमारे लिए तो ये very cold है. Then he challenged me, you have to wait till winter. Then winter का पहला दिन में अभी भी याद है 7 degree drop. Second day drop to 0. Third day 0 से कभी ऊपर आया ही नहीं. -1, -2, -3. My city, the town where I used to feel be better tha. My friends, British Columbia, Burnsville, and certain other provinces, Winnipeg, directly -40. And they used to live -40 at least for next few months. -40, Winnipeg. If you don't believe me, kabhi check karna. I can show you the place in Russia, Yakutsk. I've shown to other branches one time, promise you allow me. It is one of the oldest part of the Russia, and that place is so big. It is much bigger than India. Yakutsk. People stay there, live there, and do their work also. If they are using a car, cannot switch off their car engine. Car engine बंद कर दे तो फिर कार कभी start ही नहीं होगी जब तक winter खत्म नहीं. -40. Average temperature होगा. They are also 1700. The lifestyle might be different, but everyone like to wear a cloth which is comfortable to their skin and comfortable with the climate. But climate ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो गया तो I cannot wear cotton cloth shoes. Right from the shoes I used to wear, the socks I used to wear, everything is of woolen items. If not, shoe bites are very common, and I have to amputate my क्या बोलता बोट बोलते ना हिंदी में, उसको भी काटना पड़ेगा. Continuously स्नो में चलता पड़ेगा. But that shows us something different. So ऐसा भी है. But अभी इंडिया का कॉटन का अगर मैं डिमांड बोलूं ऑल ओवर अफ्रीका, ऑल ओवर अमेरिका, अमेरिका में ऐसा हर जगह ठंड नहीं है ना. You know there is a place called Florida. Florida's climate is exactly like Mumbai. But then Florida में sweating बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि उधर बिल्कुल ह्यूमिड नहीं है. गर्मी बहुत, but आपको पसीना भी नहीं निकलेगा. Is it good or bad for your health? Good. How come good? Bad for your health. You know why do we so that अपना body को temperature कम करने के लिए ये सब automatic mechanism है. अगर तू sweat नहीं करेगा तो तेरा body में वो रह जाएगा अंदर ही अंदर, and it will create trouble for you. तो देखो कैसा कैसा countries है. But then India has a climate which generally favored. Generally, you go to Singapore, you can't even wear one layer. Majority ladies are the shorts of this much size only, because गर्मी बहुत है सिंगापुर में. 43 तो average है उनका. 43. And every day they get rain. That is one thing. Every day get the rain. There is no winter in Singapore. Only summer. एक ही क्लाइमेट है और हर रोज रेनफॉल. हफ्ते में 5 दिन तो हेवी रेनफॉल गिरता ही गिरता है. अभी मतलब क्या, अभी now it is 7:30 ना, now it will be 11, 10:45, and every evening they will get a rainfall. But the government of Singapore has done, one building से दूसरा building जाने के लिए पूरा path बनाया, roof बनाया, exact. No other country I have visited like Singapore, neat and clean, best. Okay, don't speak Hindi.
What papers? Free board sir. तो उधर से बनाओ नहीं नहीं मत जाओ चलो let's come to importance. First point I have given. yes What was the last point? Just tell me. Next and the last. So industry, चलिए right? लिख दिया लिख अरे मैं दे रहा हूँ नया point. मतलब ये बुक से नहीं है ऐसे ही दे रहा हूँ. अच्छा So मैंने सारे this- पढ़ stop किया तो extra लिख. So this industry is of vital importance. Vital. VITAL. Importance to the overall development of economy, and the laborers involved in it. Economy and the laborers involved in it. That's all. So we have finished cotton textile और क्या बात ये अपना जूट है sugar industry. फिर iron steel है. ट्राई करते हैं कि आज ये खत्म करें. केवल चलो होने का chances तो है. We will see how it can be done. Okay, 7:30. You come back, huh? What's his name? Amrit. Yes, sir.
अरे क्या है चलो, Numbers है। let's finish this chapter today. ये 4 इंडस्ट्री तो है, हाँ? ऑटोमोबाइल सब स्मॉल है, देखो ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि कॉटन है, जूट है, फिर आयरन एंड स्टील है. चलो, the next industry, what are we doing? We're going to do Problems of sugar cotton textiles, ना? ये बहुत important है. Either you mark it or I give it. Which one you prefer? Anyway, marking. मैं तो पूछा क्यों? नहीं, एक choice जानने के लिए रहता है. कंडीशन मार्किंग किधर लिखना पड़ेगा? देखो, whether I'm giving it or not giving, that's a different question. What is your concern? I want to ask. Don't you think without asking also I can give? Yes. And then why did I ask then? Just to judge you guys. Yes. What was the page number here? 154. 144, huh? 54. Okay. Why did we are sleeping over the bench? Problems में आ जाओ. Come to page number 154. Put 2 star marks to this question. Every time they'll ask you. The first problem देखो, obsolete machinery डाला है, उसके ऊपर लिखो outdated. Outdated. Obsolete के ऊपर डालो outdated machinery. Outdated. Updated कैसा problem में आएगा? हो गया, किसका आंसर का हवाला लगा इसको? Outdated. Next, erratic को लिखो irregular. Irregular power supply. Next, low productivity of labor and inefficiency. ऐड करते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ. And उधर लिखना, तेरा नोटबुक तो है. You are such a crooked fellow. एक वॉल्यूम घूम गया तो जिंदगी भर वॉल्यूम नहीं लेगा. Next, you come without the volume. I'll see you are placed outside the class. That I do not know. नहीं लाऊंगा तो मत. Stiff competition with synthetic. Synthetic के ऊपर लिखो man-made. Now tell me which man-made fiber is a close competition with the cotton? Huh? Correct. Nylon. Is it a natural fiber or synthetic? What is the meaning of the word synthetic? Man-made. Why nylon has a big competition with cotton? Synthetic में ये nylon जो है easy to use, no need of ironing. But cotton, the only hate I is ironing. But अभी मैंने उसमें भी मेरा काम निकाल दिया, मैं पूरा लॉन्ड्री में देता हूँ, वॉशिंग क्लीनिंग वही करता है. Because हमारे यहाँ पे एक मनी लॉन्ड्री है, 1 kg के लिए 100 रुपीस लेते हैं. 1 kg नहीं रहता है, इज वेरी स्मार्ट. अंदर कपड़ा पूरा ठूस के वो 2 kg निकाल, बट चलेगा ना. स्टीम आइनिंग, पावर आइनिंग सब कुछ वही करता है. 200 रुपीस का अच्छा खासा आइनिंग. बट देन शर्ट्स का 1 kg. So we always believe the problem with the cotton is this, but the problem advantage with nylon is that. Understood? So let's go to the next one. Fragmented units, unable to cater to local market. Unable word नहीं होता. The fragmented मतलब like छोटा-छोटा private sector में है ना. ऐसा नहीं कि एक साथ 100 मिल पड़ा है. इधर एक छोटा मिला है, उधर एक छोटा मिला है. अभी आप कुर्ला में जाएंगे तो कम से कम तुझे 10 मिल जाएगा एक ही एरिया में. बट सबका प्रोडक्शन अलग है. तो अगर लार्ज स्केल में तो डालेगा तब जाके प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल होगा ना. नेक्स्ट, ग्लोबल मार्केट फॉर कॉटन yarn इज अवेलेबल. हाँ, ये प्रॉब्लम है. बट गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैव टू इंपोर्ट. अंडरलाइन द वर्ड गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैव टू इंपोर्ट. हु इज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर? एनीबॉडी? जो क्लॉथ बनाता है वो तो कॉटन बाहर से मंगाता है. फिर हमारा कॉटन जाता किधर? We are selling it to Japan, we are selling it to US, we are selling it to France. बट हमारा गारमेंट वाला बाहर से कॉटन मंगा के उसको. क्यों? हमारा कॉटन बहुत महंगा है. The best quality cotton is going out. Understood what I'm saying? So that is also trouble. Profit नहीं है. It's understandable कि इंडिया का एक हाई क्वालिटी कॉटन वो बाहर ही जाता है. अभी जैसे I purchased one big shawl to my mother, made in India shawl, but I bought it from US.
उसने तो पता नहीं अभी वो शॉल पहना हुए क्या फेंक दिया पता नहीं, बट मैं कम से कम कितना डॉलर का लाया, $75 का लाया। तो मैंने बोला इंडिया में मिलता है नहीं, मुझे वहां से लिखा है। $75 इज बिग अमाउंट फॉर एन इंडियन, है ना। अभी हमारा महंगा से महंगा जो कपड़ा मैं उधर पहनता था जो बहुत मोटा रहता था, $40 में मिलता। बोली मेरा बेटा यूएसए लाया, वो बहुत पतला अपना पश्मीना शॉल ही सुन वैसे ही, बट देन शी डिडंट यूज। फिर उसको मुझे लॉन्ड्री अलग से देना पड़ता था, शॉल है ना, फिर उसका क्लीनिंग अलग से होता था, फिर ये अलग से होता था। तो जो भी इंडिया में बेस्ट है, वेदर इट इज राइस, वेदर इट इज व्हीट, सब कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। देन वहां से आप इधर लेकर आके पहनो, मेड इन इंडिया का ही शूज है, बट इटालियन सोल लगा है, लेदर है इंडियन का। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? सो द बेस्ट क्वालिटी ऑलवेज इज एक्सपोर्ट। तो इंडिया में फिर इंडियन प्रोड्यूसर के लिए भी तो चाहिए, so he imports and then he manufactures. That is a problem. Now run through all the problem and tell me, will you be able to write on your own? On your own in the exams. Relax. He doesn't matter, so he's in the state rooms. Any of the points in problems done? Chalo. Now let us go to jute. Now, if I want to explain jute, I say it is the golden fiber of India. Why do you understand the word golden? कब दिखता है? जब fully matured हो जाता है तो गोल्ड। जूट फाइबर देखा भी है? What is jute by the way? ऐसे वो रोप टाइप होता है। रोप टाइप, वो जो सुतली में डालते हैं। हाँ, सुतली में नहीं डालता हूँ, सुतली जूट है। ये जो राइस और व्हीट पैक होके आता है, ये प्राइवेट स्टोर में नहीं आता है, उसी को जूट बैग बोलता है। एंड इट इज सो स्टडी। इनफैक्ट इंडिया में बोलता है नेक्स्ट टू कॉटन सबसे ज्यादा डिमांड उसका है। आप विंटर का टाइम में अगर आपके घर में गनी का बैग है, जो राइस और व्हीट आता है आपके घर में, वो डाल के आप खड़े रहो ना, एक ठंडा भी नहीं लगेगा। इट इज वेरी स्टडी, पानी भी बिल्कुल सूखता नहीं होता। एंड जैसे इसने बोला सुतली को कभी आप तोड़ के तो देखो, इम्पॉसिबल है। एंड जितना भी ये बैम्बू का ये रूप बोला ना, बैम्बू का जो परांची बनता है आपके बिल्डिंग में, वो सब उसी का रहता है। एक बार वो गीला करके उसने बैम्बू को बांध दिया, चेन का भी जरूरत नहीं। दैट मच इज इंडिया में we have it in Calcutta. 64% of the total is produced in Calcutta, but Bangladesh is number one. Why? Partition होने के बाद, जब partition हुआ ना, पूरा स्टेट पूरा प्रोड्यूसिंग बांग्लादेश चले, बट इंडिया में भी जूट बनाता है, बट ड्यू टू प्लास्टिक बैग, ड्यू टू अदर बैग्स, ये कंपनी बंद हो चुका था। बट अभी 1985 जूट एक्ट के लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया, क्या? मिनिमम 50% of rice, wheat and sugar must be packed in jute, at least in ration shop. प्राइवेट शॉप वो प्लास्टिक में पैक करे, कुछ भी करे, बट जो भी सामान राशन शॉप में जाता है वो जूट बैग में ही होगा। इससे क्या डिमांड होगा? जूट। किसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? जूट वर्कर्स। करेक्ट। चलो लेट्स मूव अहेड। हिस्ट्री। द फर्स्ट जूट मिल, अंडरलाइन कोलकाता, नेम ऑफ द प्लेस इट इज रेशुरा। After partition, jute mills remained in India. Underline 3/4 went to Bangladesh, jute producing. Then location, underline 70 mills are in India. And उसका 80%, 70 का 80% कितना होगा? Anybody? 68. 65 में बोल सकता है। 6 मतलब 80 भी 70 है ना, 65 भी नहीं। It will be 59 or 60. मतलब 70 जूट मिल में से 80% तो कोलकाता में ही है ना। लेट्स सी आंध्र प्रदेश से देखिए। कम टू नेक्स्ट पेज। वायर जूट वो सब चलेगा। फीचर्स अंडरलाइन। सेकंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। व्हाई इट इज नेक्स्ट टू कॉटन? नहीं, जूट का पहने के कैसे रे कुर्ता रहेगा नहीं बनता। ये जो डोर मैट बनता है, फिर कारपेट बनता है, फिर हैंडीक्राफ्ट कमोडिटी, और इसका एक्सपोर्ट भी बहुत होता है। फिर वो पानी। अंडरलाइन सेकंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। इंडिया रैंक्स अंडरलाइन नंबर 1
इंडिया इज द सेकेंड प्लेस इन एक्सपोर्ट. देखो बांग्लादेश हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है. इंपॉर्टेंस अंडरलाइन. सपोर्टिंग 6 लाख वर्कर्स डायरेक्टली. अभी डायरेक्टली का मतलब क्या है? वो काम कर जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, या तो उसका प्रोडक्शन में, या तो उसका एग्रीकल्चर में. इनडायरेक्टली मतलब उसका पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Next, many more people are associated underline indirectly. I will put a question in a notebook. Why jute mills? Why jute is referred as? Why jute is referred as golden fiber of India? Why jute is referred as golden fiber of India? Point number 1. It appears golden brown. It appears golden brown when it is fully mature. It appears golden brown when it is fully mature. Second, high value commodity. High value commodity for exports. High value commodity for exports. Next. Several uses. Several uses. Next. Highest employment next to agriculture and cotton. Highest employment next to agriculture and cotton. Okay. Now we come to page number 155 again. एक क्वेश्चन दिया है प्रमोशन, बट उसके नीचे ही आंसर भी दिया है. तो यू ओनली प्रमोशन ऑफ जूट इंडस्ट्री के आगे 2 क्वेश्चन मार्क डालो. देखो पहला पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी. व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर मैंडेटरी? हाँ, कंपल्सरी. उधर लिख लो कंपल्सरी. यूज ऑफ जूट पैकेजिंग. Second, to stimulate the demand, underline, product needs to be diversified. Who can tell me the meaning of the word diversified? Okay. उसको जरूर है. What are you? Are you here? Which word meaning I am asking? Diversity. What is it? If you are making only jute bags, will the consumer will have a maximum demand of that commodity? What all it is made? Carpets बनता है. Does carpets have demand all over India? Yes. Then do we have doormats? And do we have handicraft commodity? So raw material is one, but I'm making more and more new products. So automatically इसका demand क्या होगा? बढ़ेगा. So what is diversified? Making Different things. Now उधर लिखो. Making different things. तो diversification का मतलब वही है. Multiple things. Raw material is only one. Next. फिर कौन सा है? Now the national jute policy, they definitely ask you separate question. What is national jute policy? Which year? 2005. पहला point, increasing productivity, improving quality, ensuring good prices to jute farmers. How this jute farmers के लिए गवर्नमेंट क्या दे सकता है अच्छा प्राइस? जैसे MSP फिक्स है कॉटन के लिए. You know what is MSP? Minimum support price. जूट के लिए भी, जूट को भी MSP में ला. प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो, आपको जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया हो तो मिलना ही मिलना है. उसके ऊपर मिले, उसके नीचे नहीं जाना. करेक्ट. नेक्स्ट इज एनहांसिंग यील्ड पर हेक्टर. व्हाट इज यील्ड पर हेक्टर? एक हेक्टर में कितना जूट प्रोड्यूस होता है उसका भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बना के रखा है. इज इट ओके? Put the promotion of jute industry as question और answer डाल दो 55. Right on. Explain different ways to promote. Explain
different ways to promote jute industry in India. Explain different ways to promote jute industry in India. नहीं, डाल दो. Answer is on page number 155. लिखना है? अच्छा उसमें डाल देंगे 150. UT volume page number 155. अच्छा है. साथ में कभी मेरे से पढ़ाई कर. I'll be very happy. Not in Hindi at least. So the next heading is sugar in this. Good. Besides looking into the volume, what do you feel the demand for sugar in India? Everything के बारे में है. Highest. India is the second largest producer. Brazil is first. But still, India का दिन भर दिन जो sugar production है बढ़ता ही जा रहा है. अभी देखो Diwali is on coming Sunday, coming Monday. नहीं Sunday. उसके पहले ही था. 31st को दिवाली है. ये कौन सा? First को 31st को दिवाली first को अच्छा जान. I say the sweets is the biggest sale, है ना? There are certain sweet mart. I think अभी तो बहुत कम हो चुके हैं. जो 6 महीना जो sweet ने बेचा वो दिवाली में निकाल दिया उसने. ऐसे निकाला उसका स्किल है. तो इंडिया में आज भी sugar is not only sugar but good, कंसरी, मोलासेस, प्रेसमेंट, पाक से इतना बाई प्रोडक्ट है. एंड जो भी शुगर केन फार्मर इंडिया में, स्पेशली महाराष्ट्र, द मैक्सिमम मर्सिडीज E class, you know what is E and what is C? E is executive class car. C is comfort class, S is sedan. तो E class Mercedes is the costliest one. हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा बुकिंग और खरीदा है महाराष्ट्र में. एंड वो भी शुगर केन फार्मर्स नहीं खरीदा. उसमें से 2 फार्मर तो चॉपर का लाइसेंस भी मांग रहा था कि वी नीड टू बाय चॉपर. बट मुकेश अंबानी से डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होने के करके महाराष्ट्र ने बोला नहीं, आप चॉपर लेके क्या केन में थोड़ी उतरेगा, है ना. बट सो मच मनी. व्हाट इज दैट वर्ड, सो मच मनी? पढ़ाई नहीं होगा ना जाके because sugar cane का prices you know best. If you go to a near a sugar cane वाला juice वाला, an example, my friend has calculated, I have told you, बोलता है 1 ton hardly cost him 2000 rupees. 2000 1 ton मतलब 1000 किलो को 2000 रुपया जाता है. 1000 टन में कम से कम कितना शुगर केन आएगा देख लो, ठीक है. तो बोलते हैं कि एक शुगर केन में 5 गिलास बनता है, 5 गिलास. तो बोलते हैं 100 शुगर केन में 500 गिलास. 500 भी है ना, हाँ 500 और मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना खरीदा, कितना हो गया 1 लाख. तो वो उसी में कमा लिया 1 लाख रुपए. अगर वो पूरा टन का अगर वो प्रोड्यूस करेगा जूस, अरे बाबा सब लोग नहीं पीते तो तुम मत पियो ना. हाँ तो रेनी सीजन और विंटर सीजन में कभी दुकान खुला है? एक मिनट, रेनी सीजन और विंटर सीजन में शुगर केन का जूस का दुकान खुला रहता है, बंद रहता है. दे गो बैक टू देयर फार्म्स. दे स्विच इट ऑफ. Only during summer season. So this is sugar cane in India. So we have Maharashtra, we have Karnataka, we have Tamil Nadu, we have UP and Bihar. तो ये साल भर का चलता है. मिनिमम उसका ग्रोथ स्टेज है 7 to 9 weeks मिनिमम. तो बाकी 3-4 महीने में और कुछ क्रॉप लगा सकता है. और एग्रीकल्चर में याद है मैंने बताया सेट, मतलब एक बार आपने काट लिया और 2 बार ये ग्रो होता है. आपको एग्रीकल्चर ये क्या बोलते हैं, प्लोइंग भी करने का जरूरत नहीं. यू नो व्हाट इज प्लोइंग ना? राइस और व्हीट काटने के बाद पूरा प्लोइंग करना पड़ता है, सॉइल को टर्न करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है. शुगर केन में वो करता नहीं. एक बार आपने प्लोइंग करके सीड डाल के ग्रो कर दिया, नेक्स्ट 2 टाइम आप प्लोइंग मत करो. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लोइंग? पूरा सॉइल को चेंज करना है. कर सकते. डिब्बा में आएगा शुगर केन और तुम्हारा पापा को बोल के और एक डिब्बा में शुगर भी बना. क्यों नहीं आएगा? डिब्बा करेंगे. Which one? Which form of sugar? Sweets. Normal sugar only. Brown sugar also used, but brown sugar is a little bit costly as compared to the normal sugar.
ब्राउन शुगर इज ओनली फॉर हेल्थ वाइज, जो हम लोग चाय में डाल के पीते हैं। जैगरी वाला जो चाय बोलता है ना, गुड़ा अच्छा चाय, दैट इज ब्राउन शुगर। Sir, it is special features में दिया है, India is the largest producer of sugarcane. हाँ, The next point में लिखा है second. तो ब्राजील, ब्राजील। So तो फिर वो largest. Listen, शुगर केन लार्जेस्ट है, बट शुगर प्रोडक्शन में इंडिया कम है, क्योंकि इंडिया का डिमांड उतना सा। अब जैसे सीरियल प्रोडक्शन में सबसे टाइप का दाल इंडिया ही बनाता है, उड़ दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, जो भी डाल है, बट हम इतना उसको खाते हैं, फिर इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता है। हाँ, सब लोग खाते हैं ना, ऐसा कोई नहीं कि हर रोज नॉनवेज खाता है। एंड नॉर्मली इंडियंस वर जनरली वेजिटेरियंस ओनली। ये मंगोलियंस एंड मुगल्स आने के बाद ये मसाला और ये नॉनवेज से आया, वरना तो इंडियंस वर 100% प्योर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन भी बना सकते हैं सर आप। हाँ, आप भी प्योर वेज है ना? नहीं, अब्रॉड जाने की वजह से मुझे प्योर नॉनवेज हो पड़ा। You are vegetarian, is it? Yes sir, चलो unfortunately. चलो, no, it is not unfortunate, it is good. In fact, the vegetarian foods are those food which will make your brain and shiny. It doesn't support God. Listen. Yeah, we concept है ना vegan, or you call this vegan. Vegan concept is a concept which my own friends who are living there, those who are born and brought up in a place where only meat is eaten, they are vegans now. मुझे शौक होता है, साला इतना खाने के बाद तू कैसा वेगन बन गया? मतलब कुछ भी नहीं, मतलब दूध वगैरह कुछ भी, बस पत्ते। हाँ, ओनली हरी पत्ते। salads, मतलब वो भी तो दूध भी उसी का जैसे ही बनता है ना, वो नहीं खाएंगे। प्योर सुनते ही पड़े। पनीर खाया नहीं इसको ये सही होगा, तुमने पनीर आप इतना दूर क्यों जा रहा? विराट कोहली is a vegan. He himself is a vegan. The water he drinks also special quality water. What is that? Alkaline water. Kala Kala pani. हाँ. That's very weird. Wait, but that water is so neat and clean. मेरे घर पे भी हम लोग ने मशीन लाने का बात किया। सर काला पानी बनता कैसे? Black It's all the impurities from the water and it's only pure water. But अगर आप वो पीने लगेगा तो पहले 3 महीने तकलीफ होगा, क्योंकि हमारा बॉडी का inferior सूट। सर तो मतलब प्योर वाटर काला 3 lakhs का मशीन है, तो मैंने बोला नहीं चाहिए, हम लोग फिल्टर में आगे। सर तो ब्लैक क्यों हो रहा है? ब्लैक नहीं है, ब्लैक मतलब it's all impurities are removed from the water, even minerals भी नहीं रहेगा उसमें। अरे बाबा, वो स्पोर्ट्समैन है एंड विराट कोहली इज अ फ्रीकी फिटनेस फेलो। जितना भी आज तक जो फिटनेस क्रिकेट में था ना, वो ही इज वेरी टू बी टॉप। अभी उसके बीवी भी देखो ऐसे हो गई, शायद उसको भी उसने डाल दिया था। वरना ही वाज क्वाइट अ नॉन-वेज फेलो, ही इज अ नॉर्थ इंडियन टाइप ना। हाँ, नॉन-वेज ही था, बट इन बिटवीन आई हर्ड ही गॉट अ सर्जरी और समथिंग इन व्हिच डॉक्टर आस्क्ड हिम टू ईट फॉर सम टाइम वेज, तो वो वीगन ही बन गया। पानी भी नॉर्मल पानी नहीं पीता। सर काला पानी चलो, दैट विल डू रिसर्च। मिनरल्स निकाल के काला बन जाएगा पानी। अरे पानी, बात। हाँ, the word is like that. Black water black You water are a vegan na? Go and ask your dad. अच्छा, you are a vegetarian ना? Go and ask your dad. Dad will know that. He will explain. ऐसे सर ने बोला कि विराट कोहली पानी में कुछ अलग करता पीता, वो क्या है कुछ पापा बताओ। चलो, let's जूट मिल हो गया, let us go to promotion of jute industry भी हो गया। Sugar, underline, largest producer of sugar. India is second world producer of sugar. Oil. Sugar cane में India largest है, sugar में India second है। हाँ, and India is the largest producer of underline, good and Kansari. Kansari is a Kadi Shakara. There are underline शक्कर और शक्कर में क्या अलग अलग। Location underline. It is bulky and perishable. Point number 1. Sucrose content reduces. Sugar mills are haulage in that particular bundle. अभी कोई भी शुगर केन काटते ही 48 आवर्स में उसको क्रशिंग होना चाहिए। होगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना देर वो बाहर रहेगा उतना उसका सुक्रोज कंटेंट कम हो जाएगा। तो नॉर्मली 90% ऑफ द शुगर मिल्स आर वेरी क्लोज टू द शुगर केन फार्मिंग एरिया। एक तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो गया एंड इट इज अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। व्हाट इज वेट लूजिंग? हाँ, वो चलेगा, वो तो रखता है,
कम आएगा तो उसके लिए नुकसान, हमारे लिए फायदा। उनको तो उतना ही देना है ना, एक गिलास भर के देगा ना तू, नहीं भाई साहब वो शुगर केन कम बोला तो मुझे क्या भर के दे, तो इसलिए वो हमेशा आइस डाल के रखता है। दे आर वेरी स्मार्ट। आइन ऊपर नीचे करते समय भी उसका जो लैदर जैसा आता है, अब थोड़ा देर रुको कम हो जाएगा, लैदर पूरा भर के देते। उसका जो फोम आता है, कोल्ड ड्रिंक्स Do you have horns on? Hey, listen. Do you have horns on your head? Check. Check it. हाँ, good होता है. She checked first. Let us go ahead. There are 502 sugar mills. Open bracket. UP, Bihar. Mainly underline this. Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu. Because अभी majority of the sugar cane producing area यूपी बिहार से, अभी कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में आता है. Underline next. 60% mills are in UP and Bihar. It is seasonal in nature. So suited to cooperative. What is seasonal? 12 महीना ये ग्रो नहीं होता है. हाँ, तो इसके लिए कोऑपरेटिव सेक्टर रहना जरूरी है. What are cooperative sectors? अभी 100 या 200 लोग मिलके एक शुगर मिल स्टार्ट कर देते हैं. एंड ये 100-200 मिल ओनर वाले ही वो ओनर भी है, जो उनका फार्म में शुगर केन ग्रो होता है वो उनका मिल्स में जाता है. ये महाराष्ट्र का बेस्ट एग्जांपल है कोऑपरेटिव सेक्टर. यू नो व्हाट इज कोऑपरेटिव? नॉट वन और टू ओनर, ऑल द शुगर केन फार्मर्स आर ओनर ऑफ दैट मिल्स. जितना भी प्रॉफिट आएगा इक्वली शेयर होगा, बट मनी इज ह्यूज शुगर केन एंड शुगर मिल. नेक्स्ट, एक्चुअली एक क्वेश्चन भी है, देखो. This industry is so seasonal. Okay, cooperative societies underline successful in Maharashtra and AP. Uses में नहीं पढ़ रहा हूँ, ये इधर क्वेश्चन इधर ही डाल दो, जिसके पास वॉल्यूम नहीं है नोटबुक में लिखो. Why there is a southward migration? Write down in the volume. Those who do not have, write it in the notebook. Why there is a southward migration of sugar mills in India? Why there is a southward migration of sugar mills in India? हमें साउथवर्ड माइग्रेशन कहां से कहां माइग्रेट हो रहा है इंडस्ट्री? यूपी बिहार से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश. इज महाराष्ट्र इन साउथ? No. Exactly not in south, but यूपी बिहार के सामने तो महाराष्ट्र साउथ में आता है, तो that is southward migration. Is the mills are moving? No. The sugarcane producing area is more in south than in north. Correct? Abhi reasons. Point number 1. There is a tendency of the mills to shift and in concentrate. Underline tendency. The cane produced underline higher sucrose. किधर? South one. Underline cooler climate, longer crushing season. जब कूलर क्लाइमेट के से लोग साउथ होके आ रहे हैं. महाराष्ट्र में ठंड में कैसा कभी तो अंदर गया है? हाँ. There are places where the temperature goes to 7 degree. हाँ. महाराष्ट्र. सेंट्रल महाराष्ट्र. नासिक में जा कभी? I I traveled first. travel from train, no, go towards Nashik. I कोल्हापुर जा. कोल्हापुर. I have felt it. Traveled I by a super class AC luxury bus to Shirdi first. My friend keep on asking कि स्वेटर ले ले ये ले ले. मैंने बोला क्या कनाडा का ठंडी देख लिया, ये ठंड में क्या होगा. एसी बस से जैसे ही नीचे उतरा सुबह 4 बजे उन्होंने छोड़ा नासिक में. तो इतना ठंड लग रहा था, मैं बोला एसी बस ज्यादा गर्म है, मैं अंदर ही ठंडा. ऐसा शिरडी में तो ठंडी नहीं लगी. वो ठंड का टाइम में गए नहीं है. That is a trouble. शिरडी में लगती है. भाई शिरडी में ज्यादा ठंड लगी. कौन सा मंथ में गए? मैं गया था अभी दिसंबर में जा, you will feel. हाँ लास्ट ईयर नवंबर में गया था. नवंबर में तय है. अभी दिसंबर में जा, महाबलेश्वर चले जा, सातारा जा. वो भी लोनार है. I know. That is why Mahabaleshwar is attracting now in I traveled to train police Nashik. very trend. And it- Chalo. Guys, come back to our chapter. Cooperatives are underlined, more successful. Modern methods of production. Add 2 more points. You add points in your notebook. Modern methods of production के नीचे और add करो. Cooperatives and local labor. Cooperatives and local labor. किसका आंसर होगा? इसी का continue. Cooperatives and local labor are easily available.
Next, highest. Sugarcane producing areas are in these states. Next, better mode of transport. Next, highly supportive government policies. Highly supportive government policies. State government. Next, individual farmers. Are large in numbers. Large? Ah, What large? maximum farmers are individual. What did you understand? No, I was asking about the. Maximum in numbers. If you say individual farmers are maximum in numbers. Next, budget time. Next look all also individual. Now let us go to mineral based. अब ये notebook में लिखो. ये मैं थोड़ा देता हूँ. फिर आपको read करो. It is easily understandable. And it's here. Soon after industrialization, introduction point. Soon after industrialization, India established or government established iron and steel industries as the basic and key industry. Basic and key industries. Basic and Key industry. key. Key, हाँ दोनों है ना एक से बढ़कर एक. Key. Second, Tisco, Tata Iron and Steel Company. Is one of the largest. Tisco is one of the largest iron and steel in the entire Asia. Steel. Iron steel. In the entire Asia. We are the 2-year volume. Divya, you start reading. History. And you should be out of the sleep. Read. History. No, you need to read geography. Read geography. Because I don't geography. I didn't find anything to laugh at. Are you a little bit crack or fully crack? Then why do you come here? There is a Bhagav Kanal in Koperkar. Shall I call? Free of service. You go there, they will be more free with you. The companions are similar like you. Read. Industries that use minerals and metals. Importance से start करो. The iron and steel industry is the basic. Underline the word basic. All Next. other industries, heavy, medium, and light, depend on it for their raw material. Underline their raw material. Next. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods. Look at your reading also. As if the Marathi medium bacha is reading. Huh? Read properly. Steel is needed to manufacture a variety of If engineering. you want to open bracket from here. You know what are engineering goods? Yes, sir. Which?
Machines, all types of machines. bridges. Construction materials, defense, medical, telephonic, scientific. Bacha, next one. Production and consumption of steel is regarded as the index of a country. Underline the word index. Very simple. I mean, an average Indian like you and me, how much amount of iron and steel we make use shows the development of the country. I mean, what you and me are using, nothing. Maybe furniture, maybe a little bit of equipments. It's, huh? I mean, plates, okay. But how much amount of production unit is very less. For an average American, it is very high. He might be using a high quality yacht. You know what is a yacht? He might be using something which is related to manufacturing in his own house. He might be using a good quality of what is that? What is that kitchen we make it? Modular kitchens. देखा है सब steel का बना होता है वो high quality steel. He might make use of a biggest of the biggest wash dishwasher. अबे हमारे घर में से कितने घर पे डिशवॉशर है थोड़ा सा काम वाली भाई आती है वही वॉश करती है उसी को हम डिशवॉशर बोलते हैं हाँ मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है सो एन एवरेज इंडियन इज यूजिंग लेस ऑफ आयरन स्टील अभी लेस ऑफ आयरन स्टील ये भाई साहब प्लेट स्पून सब गिरेगा तो वो अलग होता है वो खाने की चीज है ना बट हमारा जो रेट है और एक डेवलप कंट्री का रेट है बहुत कम है सो दिस शोज द इंडेक्स ऑफ डेवलप Is it okay? Yeah. Next. In 2019, and with the 111 million tons of. What is that 111 million? Huh? Do we read like this? 111. 111 million tons of crude steel production. Underline that word. 111 million. What is this word crude steel? It is not fully finished. I mean, now you might have seen these vans which are carrying that steel circular kind of a thing, which is tied trucks. In fact, I had studied why that is roped onto the trucks like this. It is in. Yeah, ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है. Instead of like this, it is carried on like this. देखा है? And chain से बांधा रहता है. और scientific question क्या है? इसको लोग ऐसे क्यों लेके जाता है ऐसे क्यों नहीं उस दिन वो मैं जिस एरिया से मैं कॉलेज जाता हूँ उस दिन एक बहुत ऐसा 2 रोल के साथ एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि अगर बाय चांस से खुल जाता है नॉर्मली नहीं खुलेगा बट खुल जाता है व्हाट विल हैपन इट विल अनवाइंड इटसेल्फ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इट इज लाइक दिस बट द रोलर इज केप्ट लाइक दिस अगर बाय चांस अगर खुल गया जितना वो लॉरिया आजू बाजू में मैंने सबको ठोक देगा इट विल विप इट You can cut it into pieces. वो आपके कॉमन सेंस के ऊपर है छोड़ दो ना कॉमन है ना सेंस है फिर कहाँ से मैं बताऊँ Understood? So next time you see these kind of iron rolls are rolled always like this instead of carrying it. So ये दोनों वो जो ड्राइवर बैठता है उसको तो दबा ही दिया था एक तो नीचे भी गिर गया था बट वो अनवाइंड नहीं हुआ अगर अनवाइंड होता impossible to see how many people might be cut into pieces. So that is the danger of these. Are there then railways trains? It is carries, but अभी रेलवे में क्या 2 थोड़ी रोलर लेके जाएगा 4 रेलवे लेके जाएगा 1000-2000 अभी मुझे 4 रोल चाहिए इसका कोई छोटा कंपनी के लिए 4 रोल तो ट्रक में ही जाता है and it is always like this instead of like this. So if it is like this and if it is suddenly unwinds, the most dangerous victim will have it. Like in that movie कोई तो एक मूवी है उसका नाम भूल गया हमेशा वो एक्सीडेंट होता रहता है और उनको आंखों में दिखता रहता है Insidious. Not Insidious. Final Destination. Final Destination. We are into I think 5 or 6 ना मतलब वो मूवी was so popular Final Destination 1 and 2 मतलब जैसा दिखता है exactly वैसे ही होता है how he comes out of the accident that is the movie. चलो read. India ranked second among the world crude steel producers. It is the largest producer of sponge iron. Sponge iron, उधर लिखो soft iron. अब wait करो थोड़ा time break में क्या कर रहा है ये एक मिनट he going to the washroom do you have a problem keep your mouth shut
Unwanted things, mate. You go for him. Will you? And then keep your mouth shut. Indecent guy. मैं पूछ रहा क्या कर रहा था शी सिंह सो रहा हाँ समझ गया अपनी इसका आंसर नहीं किया मैंने why don't you speak in English tell it in English wait read in 2019 per capita consumption of finished steel is in the country was only around 74.3 kg per annum again. one thing is sure today the lecture ends you are going to get good beatings from हमेशा बोलता रहा तो मारता नहीं क्या read properly my dear जा what you What उसको भेजेगा 2019 per capita consumption of finished steel in the country was only about 74.3 kg per annum again. नहीं ये 7434 नहीं आएगा read average of 29.3 kg. 220 she can't even read a three figure number in a what kind of maths you don't have maths is it and why do you read these numbers three figure number को आपको पढ़ने में आता है क्योंकि वो अच्छा लगता है अच्छा लगता है but सामने वाला तुम कैसे सोचेगा 1111 मतलब आज मैं 1,60,000 का चेक बनाना था मैं बोलूं 1,6,0,0 बैंक वालों को पागल लगते हैं इसको आता ही नहीं कुछ और एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया तो क्या होगा 1,60,00,000 का चेक बने और एक एक्स्ट्रा जीरो डालो तो क्या होगा रुकना होगा हाँ तो तुम देगा मेरे पास होंगे हमें होगा तो देगा ना मुझे बट मेरे को है ही नहीं कि मैं if you have will you give it to me अरे 16 करोड़ sure आपका बैग कौन सा दोनों में से बैग दे दो 16 करोड़ रख लो उसमें 500 है ना नहीं 500 इसका है बट है अच्छी बच्ची रीडिंग हो गया सर इसके नंबर अच्छे से रॉबिंग नहीं ये किधर इसको ही घर में कोई तो रॉबर उठा के ले गया ना अभी वापस भी कर देगा क्यों है ना इतनी अच्छी होती है नहीं जेल में क्यों लेके जाना write down the negative problems yes it joined it very special features write down no special features अच्छा write special features I'm giving iron steel खत्म होते बाकी सब छोटा छोटा आंसर ही write down special features of iron steel write down special features of iron steel point number 1 heavy and bulky industry special features of iron steel heavy and bulky industry सर बल्कि इंडस्ट्री की अरे क्योंकि उसका रॉ मटेरियल भी बल्कि है फिनिश गुड भी बल्कि है राइट ऑफ बोथ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स both raw materials and finished goods सर सेल क्या है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है इंडिया का बेस्ट क्वालिटी स्टील बना सर सेकंड पॉइंट आएगा तो बेस्ट क्वालिटी स्टील in India you have to write best quality steel in India सर ये क्वेश्चन है कि special features of iron steel best quality steel is produced by SAIL SAIL full form लिखना SAIL का Steel Authority of India Limited India Limited and bracket में जगह का नाम लिखो Salem हाँ this is the place where it is located and it is in Tamil Nadu Salem in Tamil Nadu सर आप तमिलनाडु से हो yes next I will never
Who had a bad experience means entire Tamil Sir, Nadu. अब ये वाला point focus है. If I come to Odisha, if I get a bad experience, will I say the same thing for that? That's wrong. Tamil Nadu, Chennai, नहीं. Chennai. No, all wrong. Next point. Next point. Next Sir, point. आपके point guys कौन से लगा रहे हैं? Tisco. Tisco. Carry on. Tisco is the largest private sector iron and steel production company. So you never forget Ratan Tata, है ना? आजकल उनका बहुत सारा shots आता है, videos आता है. Such a lovely person he was. Sir, वो बोलता है $89 billion तो इसका property था, इसका मिस्टर मुकेश का. And उसके पीछे चल के आता रतन $110 billion. मतलब पूरा पैसा उसने चैरिटी में दिया, पूरा पैसा. Yeah, he would be more richer than. But he doesn't want that money and wealth things. Even for a Taj Mahal, there is a separate Taj Hotel, separate entry for the dogs, stray dogs. The dog which was shown during his funeral time was a stray dog in Goa. He took it and he manufactured this nano car, just seeing a family get crushed, भीग रहे थे, 2-wheeler में. तो उन्होंने बोला कि मेरे पास हमारे पास इतने पैसे नहीं कि कार खरीद. On that notice, he made a car which is only 1 lakh rupees. And अगर आप कभी नैनो में बैठे तो it is worth a decent car. ऐसा नहीं कि गंदा है, मतलब कार के लिए काफी बेहतर है. मैं खुद भी ट्रैवल किया लॉन्ग जर्नी, quite decent. मतलब 2-wheeler से भी सस्ता है. आजकल तो कोई भी 2-wheeler 1 लाख में नहीं है ना? So we have to salute this fellow. When he was sitting besides to his mother in US, which all area I forgot. कैंसर, हाँ कैंसर, हाँ. और दिन रात बैठ के उधर भी टाटा कंपनी के बारे में ही प्लानिंग बनाता रहता. That is how this person has become. He had I think 4 crushes in his life. Out of that 2 almost शादी के पहले ही reject हो गए. He planned कि he will never get married. बाकी तो तुम्हारे साथ है, कर जाओ. Sir, private को PBT लिख सकते हैं. हाँ, लिख सकते हैं, अलग है. Public को भी लिख सकते हैं. Next. In case of crude steel production, India is the second. India is second, bus. Next. Sir, ये crude steel का क्रूड स्टील मतलब ये जो अभी मैंने रोलर दिखाया ये क्रूड स्टील है. इसका और भी प्रोसेसिंग बाकी रहता है, वो अलग अलग इंडस्ट्री में जाके होता है. उसका पॉलिशिंग, शाइनिंग, कटिंग है ना, फिर टीएमटी रॉड बनता है, बहुत सारा अलग है. ये क्रूड स्टील हो गया. नेक्स्ट, इन केस ऑफ स्पॉन्ज आयरन, India is the first largest producer, or India is the largest producer. India is the largest producer. Sir, इसका example क्या होगा? Sponge iron. Example क्या दे सकता है? ये भी एक crude steel ही है ना. Sponge iron मतलब soft iron which is soft steel which is not produced in industry. Industry का जो quality steel है बहुत अलग रहता है. Actually 3 quality का steel है. एक acid है, alloy और एक कोई तो. ये जो सबसे कॉस्टली स्टील है एसिडिक स्टील, जो रेलवे ट्रैक्स बनता है ना, वो स्टील इम्पॉसिबल है. देखो रेलवे हर रोज उसके ऊपर दौड़ता है इतना ही, बट वो स्टील कभी ये नहीं होता, वो आउट नहीं होता. सो दैट इज हाईएस्ट क्वालिटी स्टील, 3 क्वालिटी स्टील. तो स्पॉन्ज आयरन इज द सॉफ्ट आयरन व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल आइटम्स, जैसे अभी तूने स्पून प्लेट्स बोला उसमें जाके. नेक्स्ट, राइट. India's per capita consumption. India's per capita consumption. India नहीं, Indians per capita consumption is only 74.3 kg, which is low among the world average, which is, देखो वर्ल्ड एवरेज कितना और हम लोग कितना कंज्यूम करते हैं. 229 इसका याद है तो 229.3 kg, 229.3 kg मतलब 230 किलो किधर
or only 74 kilokilo. So still we have to improve. Okay, chalo. So here I stop it. I could see Abhilip is putting a head down, maybe like as the come okay. नहीं हुआ. We go to the page number which I am asking. अच्छा वो Relax, relax करके आराम से बात करो. और एक 5 minutes से लेना. 5 minutes नहीं है 7 minutes. Sir, I can't write. You can write in your notebook. On Page number 176. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. and Sir, ये चार है ना. Sir, 6. 5 months. Show me and then you are doing. 1, 2, 3, 4, 6. We have to fatapat lag me exam. Those who's completing first can go well before the time. Will not stop them. अभी भी मुंबई में रेन और थंडरस्टॉर्म आ रहा है. क्या है? दिवाली के दिन भी रेन रहेगा तो मजा आ जाएगा. सर जो हमने नोट्स में लिखे होंगे उनको लिखने की जरूरत नहीं है. पूरा क्वेश्चन डाल दो. हाँ. अरे उधर जाके क्वेश्चन डाल देना स्मार्टली. हाँ. चलो ऐसा कर सकते हैं. अगर ये क्या बोल रहा है, अगर इसके पास तो वॉल्यूम नहीं है ना, उसने वो काम चोरी कर रहा है, तो वॉल्यूम में लिख दे. आंसर देख के वॉल्यूम में लिख. next week will let him come without his volume. I don't know whether it's given to his friend or friend is given to him. I want my volume. If not, don't come. सर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री भी मैंने लिखा है. हाँ तो उधर क्वेश्चन डाल दे. भैया मैंने गलत को लिख दिया है. तो करते हैं दोबारा. सर ये गलती कर दी. तो दोबारा लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है. सर मैंने फर्स्ट की जगह फर्स्ट वाला आंसर सेकंड में लिख दिया. हाँ तो क्वेश्चन को एरो डाल के नीचे और ऊपर बता रहे. पढ़ने तो वाला तू ही है. नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती कर फिर मैं तेरे लिए ऐसा आइडिया देता हूँ. द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में बस वही लिख देना. हाँ जो हम लोग ने ना बस. उनके एग्जांपल लिखने हैं. हाँ वो तो लिखना ही है. जितना भोली वाली दिखता है उतना है नहीं, इतना तो गारंटी है. Who is calling you at this time? सर इसमें तो Don't tell your mama. अरे मेरी दोस्त उसको उसके पास मेरा पोर्टफोलियो है. सर जूट इंडस्ट्री के बारे में प्रॉब्लम बताएंगे. है ना उधर दिया है, देख ले. वो क्वेश्चन भी वही है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री. हाँ है उधर. नहीं सर आंसर ढूंढ लो. मैं आए आपका ही है ना. सर ये देखो नहीं लिखा ही नहीं है. टेक्स्ट बुक में है. नहीं सर देखो ये भी सर ऐसे लिखा है. फोर्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. एग्रो बेस्ड
मेन रोल एंड की इंडस्ट्री हाँ 4 है ना उसमें हाँ तो दो ही तो लिखने हाँ एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड सर तो प्रॉब्लम ऑफ जूट इंडस्ट्री कैसे लिखेंगे फर्स्ट यू राइट इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक next What did you say? increasing competition from synthetic no support to the jute farmers Sir, आप agro based और mineral based में point this करते हैं। अरे वो तो उधर है ना यार अरे सर first कोई point नहीं। no support from the government okay next uh, Increase in competition from synthetic. then no support from the government slowly and steadily next loss of fashion people नया नया डिमांड करते हैं ना बस सर जूट का दिया पैक कर ले निकल हाँ जूट में वो नहीं है दे तू दूसरा सर वो अभी तो ये मैं बोला तो क्या अरे तो दूसरा increase in competition from synthetic. Increase in competition from synthetic. सुनना हाँ increase in competition from synthetic. increase In competition from synthetic. No support from the government. patient no support Loss of passion. loss of Passion. ये लोग ये जा रहे हैं तो अबे agro based और mineral based नहीं आ रहे बस ये लिखना है नहीं हाँ बस खत्म classify man into two groups on the basis तो कर क्या तो बस अब क्या करूँ इसके अलावा बस क्या करना है अरे कुछ नहीं अच्छा तूने एग्जांपल लिख दिया ओके मैं लिख दिया ये तो जा भाई बाहर नहीं तो जा भाई नहीं जा नहीं तो जा भाई मैं ज्यादा गलती से कुछ वक्त देता है इधर ये तेरा पेपर है अरे हाँ मैं पेपर कौन सा पेपर चलना जल्दी कितना तेज करवा रहा है मेरा है देना यश यश देना कर रहा हूँ मैं ओके जस्टिफाइड
Hmm.